Hello, class 11th physics, chapter gravitation. Today's topic is gravitational field. For previous topics, go through the links in the description. Alright, so concept of gravitational field. इससे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्लास 10th में जानते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी हुआ? क्योंकि मैग्नेट के अराउंड एक रीजन है जिसमें हम अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स का, दूसरे मैग्नेट्स का. तो दैट इज़ एन इमेजिनरी फील्ड जिसमें हमें पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उस मैग्नेटिक मटेरियल पे. तो इन द सेम वे ये थोड़ा हायर लेवल के जब हम फिज़िक्स में आने शुरू हो जाते हैं तो वी टॉक अबाउट फील्ड्स उन इफ़ेक्ट से रिलेटेड. इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू फोर्सेस बट फॉर अदर इफ़ेक्ट्स ऑल्सो. लाइक अगर हम हीट फ्लो की बात करें तो वी कोरिलेट, वी एज्यूम अ थर्मल फील्ड देयर. तो उस थर्मल फील्ड में हीट फ्लो करेगी. So that is a different thing. So now in order to understand this gravitational field, first I will define it. So the region around a body in which gravitational force is experienced is called gravitational field. Next is gravitational field line. Like there were magnetic field lines, so also there are gravitational field lines. Alright, the pictorial representation of gravitational field, which shows the direction of gravitational force experienced by a point mass placed there, is called a set of gravitational field lines. Like if this is that object, अगर हम यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट रखते हैं तो it will being pulled toward this object. दोनों साइड होगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी तरफ आने की टेंडेंसी होगी उस ऑब्जेक्ट की. तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे. इट इज़ हैविंग स्फेरिकल सिमिट्री. स्फेरिकल, ये आपको सर्कुलर लग रहा होगा क्योंकि ये प्लेन में है, बट इट इज़ इन 3D स्ट्रक्चर. इट इज़ स्फेरिकल सिमिट्री. ये अगर हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें लाइक अर्थ या कोई भी प्लेनेट, तो तब भी इट विल लुक लाइक दिस. एंड या इनसाइड ऑल्सो, इसके अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी. हाउएवर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी दे विल डिक्रीज, their intensity will decrease going toward the center. तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम और डिटेल में आगे समझेंगे, और पर आपको एक सिंपल वे में बता देते हैं. लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं डिक्रीज होती है. तो उसके कोरिलेशन में आप ये समझ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस उधर रिड्यूस हो रही होंगी. तो इन केस यहाँ से 2 आई थी तो अंदर में एक, ये मैंने कुछ कम कर दी. इसका मतलब ये नहीं है कि इधर नहीं लगेगा, बट लेस डेंस. अंदर मैं इन्हें लेस डेंसर दिखा रहा हूँ इसकी इंटेंसिटी को शो करने के लिए. कम डेंसिटी हो गई. तो लाइंस की डेंसिटी भी हमें ये बताएगी कि फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है. तो यहाँ तक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन फिर उससे आगे वो रिलेटिवली डिक्रीज होता जा रहा है. उसका ग्रेविटेशनल फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है. नेक्स्ट, अगर हाँ, और ये क्योंकि बहुत छोटी जगह है तो ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो फील्ड लाइन होंगी अंदर जाते जाते डिक्रीज होती जाएंगी. तो यहाँ पे अगर 10 फील्ड लाइन थी तो 5 हो जाएंगी, फिर ऐसे घटती जाएंगी. नाउ लुक एट दिस. इफ इट इज़ अ हॉलो स्फेयर, देन gravitational field line will reach here.
ये स्फेरिकल सिमेट्री है वंस अगेन, बट देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड दिस कैविटी. व्हाई इज इट सो, ये आगे हम क्लियर करेंगे, बट आप इस समय एक कॉन्सेप्चुअली आप इंट्यूटिवली इसे समझ सकते हैं, सोच के इसे समझ सकते हैं कि यहाँ हर जगह अट्रैक्ट होगी वो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर इसकी वजह से, इस मास की वजह से कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा. क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास की ज़रूरत है एंड देयर इज एन एम्प्टी स्पेस जो कि कोई ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता. एंड इन द सेम वे इफ देयर इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, तो क्या इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा? या ऑफ कोर्स, लेकिन इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इट विल हैव सिलेंड्रिकल सिमेट्री. ऐसे इससे हर तरफ निकलेगा बाहर के लिए, तो एक सिलेंडर फॉर्म करेगा. एंड इफ देयर इज एन इनफाइनाइटली लार्ज शीट, कुछ ऐसा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, खूब बड़ी शीट है, तो इसकी वजह से सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड always points toward that object. So remember this thing also. It will always point toward the object. क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो खींच के इसके पास जाएगा. इधर जाएगा या नहीं जाएगा, बट उस पर मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. नाउ सी, ये अगर एक सरफेस है तो वंस अगेन these are the gravitational field line. इधर जाने की टेंडेंसी होगी, इधर के लिए पुल लगेगा, इधर से भी, दोनों साइड से. एंड these are नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड्स, क्योंकि बाहर लेस स्ट्रोंगर हैं और आते आते काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं. these are नॉन यूनिफॉर्म. This is also non-uniform, but this is uniform gravitational field. Uniform gravitational field. Uniform gravitational field क्या होगा? एक तो वो पैरेलल होंगी, सारी फील्ड लाइन पैरेलल होंगी. दूसरी चीज इक्विडिस्टेंट होंगी. और यूनिडायरेक्शनल होंगी. मीन्स सेम डायरेक्शन में. तो ये भी याद रखिए, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, आगे चल के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप 12th में सीखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस. what are these their properties? They starts from infinity, ends up at the point at the body, or other than that they do not form closed loop. ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा नहीं बनता है, क्लोज नहीं बनेगा इसका लूप. दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बनता है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड में क्लोज लूप नहीं बनता. मैग्नेटिक फील्ड भी इंटरसेक्ट नहीं करती है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. द मैग्नेटिक फील्ड, denser magnetic field is given by closely spaced gravitational field line, and weaker gravitational field is represented by farther gravitational field lines. Okay, next gravitational field intensity represented by Ig actually, लेकिन आई एम पर्पजली एक्सप्रेसिंग इट एज ई सबस्क्रिप्ट जी. सो इट इज़ अप टू यू विच सिंबल यू वुड यूज़, लेकिन मैं इसे यूज़ करूँगा. सो व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं.
So gravitational field intensity of gravitational field of a body is equal to gravitational force experienced per unit mass. What is unit mass is there? So actually, if uh, if we take the example of Earth, mass m, and from its center there is another object of mass small m, then by which force it is pulling that object toward it, I will write it F subscript g. So according to definition, gravitational field intensity is equal to force, gravitational force divided by mass, gravitational force per unit mass. So actually its SI unit is Newton per meter, Newton per kg, and it is also meter per second square. So it looks like acceleration due to gravity. Yeah, in mathematically it comes out to be acceleration due to gravity, but it is far beyond that. Actually, there are two things having same formula and but two different physical significance. So G and EG. One is acceleration due to gravity. We will use this term when we have to in contacts with velocities or weight of the object, weight, which is mg, and velocities when g is constant. Remember, g is a variable quantity, but when g is constant for smaller height, then only we can easily calculate velocities. Otherwise, we'll use some modern mathematical tools like integrations, and then we can find. So if uh, we are interested to measure just the velocities and all that, we'll use the term acceleration due to gravity. But electric gravitational field intensity, we will use this term to express bit wider range of physical quantities such as potential. I'm not talking about voltage. There is gravitational potential, gravitational potential energy. These are two different things. So such term will come, and for that, instead of going through this acceleration due to gravity, we need some more specific, some more general term, which is gravitational field intensity. Then we will talk about not just an acceleration by which body is getting accelerated. We will not talk about that, but how much is the strength of field in that region. For that, we will use this term. So it is Fg, that is gravitational force upon m. Now see, if I put a subheading here, gravitational field intensity due to Earth or any similar object or planet or star, whatever. So we are deriving a formula for Earth, and we will generalize it to every other similar kind of point object or spherical object. But remember, gravitational field intensity for different shapes will be different. It will not be easily expressed as what I am going to derive. So referring to this diagram, we will find Fg, gravitational field, Gmm upon small r square. Small r is the distance of that object from the center of another object. So that's all. Eg
is equal to Fg upon m. Fg is gmm upon r square upon m. So finally Eg is equal to gm upon r square. Looks like the expression for acceleration due to gravity, which came out as gmm upon r square. And someone can say that it is the radius of that object. So but no, if with height, if we change the value of g, we will find try to find change in it, then we use this r plus h square. And what is that? R plus h is a small r. So someone can say that it is acceleration due to gravity. Yeah, on one aspect, but no in other, because of the terminologies which we further use here. So now remember, this gravitational field intensity is a vector quantity. It is a vector quantity. And what is its direction? Its direction is toward the object. Toward the object. Which object? Which we are considering. Our considered object. So here the direction of this electric field in gravitational field intensity will be toward the earth. So now see, if we take center of earth at the origin of our assumed coordinates, and there is that object, so position of that object will be expressed with in terms of this position vector. So now remember, gravitational field intensity due to earth is directed toward the earth, that is opposite to this position vector. So that is why in vector form it is given as gm upon r square r cap. R cap is the unit vector along this r going up, but direction of gravitational field is opposite to that. That is why this negative sign comes. Now what is the advantage of considering that gravitational field? Okay, one more thing, I'll tell you the advantage later, but instead of taking this entire earth, we can also reduce it to a point mass. So gravitational field intensity for a point mass, it will also be similar, gm upon r square r cap. Then instead of entire earth, what we will consider? A point object here at the origin. It will not affect anything. See the similarity? Both are similar because we have to calculate distance from the centers. So if it is a point mass, then distance from that point mass is same as distance taken from the center of earth. So this formula is a general formula. And see, now I am ending up today's discussion by putting you into a great trouble, that what is the importance of this gravitational field intensity? It is to find potential in that region. And remember, this gravitational field intensity, yeah, I don't have to write in vector form, I will write its scalar form. It is equal to gradient of potential. What is gradient? Actually, differentiation of potential with respect to distance, displacement vector. So now what is this potential is all about? Well, I think you will you would remember that electric potential you have studied in class 10th. So in class 10th, the definition of electric potential is
The work done in bringing unit positive charge from infinity to that point is called electric potential at that point. In the same way, we have gravitational potential. Gravitational potential is the amount of work done in bringing unit mass from infinity to that point. What is the advantage of this? Well, earlier the electric potential, concept of electric potential enables us to understand in which direction current will flow. But in the case of gravitational potential, it tells us whether how much energy would be stored to form that gravitational system. So here we will use these potential to find potential energy and also to calculate how much field intensity is there. So this is that, but we will discuss about this potential later on. But this is the important relation between gravitational field intensity and potential, and that is why this gravitational field intensity is important to find potentials, and later from E we can find V, and from V we can find gravitational potential energies, and after that we can do several calculations depending upon that. Even reverse is also applicable. So this is that's all for today. We'll meet in next video. It will be covering the concept of gravitational potential. Thank you.